All right, so here we have some past paper questions on this topic. So let's quickly go over the challenges, the questions जो examiner हमें देता है. So first question is, silver is a transition element. We'll talk about transition element when we study periodic table. With proton number 47, as I told you, proton number is what identifies कि कोई भी element कौन सा है. Use the periodic table to state, देखें उसने state का word use किया. State का मतलब है 1 or 2 word answer देते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. The number of occupied electron shells. Number of occupied electron shells जो होते हैं ना, all of this is another way of saying कि उसका periodic table में period कौन सा है. So all you need to do is go to the periodic table, look at the period, look at the row of that thing in there. So silver is in the 5th row. So we will say इसका 5 है. अगर आपने letters में लिखना है 5, that's also acceptable. Okay, one more question. No need to give reason. उसने state बोला था. अगले में वो कह रहे हैं describe with the aid of a diagram. So diagram बनानी. कौन सी diagram बनानी है? जैसे आपके सामने ऊपर मैंने एक diagram बनाई थी. So again, we'll draw at least 3 layers. Whether they're touching or they're not touching, it's perfectly fine. Question नहीं होता. You can use dots. You can use negative charges. आप ऐसे free electrons को दिखा सकते हो. As long as they are randomly arranged and there's no fixed arrangement, and secondly they're all over, हर जगह पे atoms के बीच में हर जगह पे होना चाहिए. And one more thing, वो उसने लिखा नहीं है, but never make a diagram without labeling it. You must always label a diagram. So I'll say this is a cation, okay, or you can say positive ion if you want, and this is a free, yeah, delocalized, yeah, C of electron. Okay, you can say the whole thing, free electron, पूरा word लिख सकते हैं. Okay, अब इसकी हमने description देनी है. Description का मतलब है कि मैंने आपको बताया था, you need to mention 3 things. First step, strong force of attraction. Second step, important thing, one positive thing between positive ions, yeah, cations. Second, third thing, negative thing, and C of electrons. And there you go. We just described it. We just described metallic bonding. Give 2 physical properties. Physical properties में क्या आता है? Color is a chemical property. Catalyst, chemical property. Reaction, chemical property. तो physical property में क्या है? Density, melting point, boiling point. ये सब जो है, ये conductor, ये सारे के सारा physical property है. अच्छा, वो कह रहा है कि not all metals, सिर्फ हमें ट्रांजिशन मेटल का बताएं. सो नॉट ऑल मेटल्स का मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं सारे ही कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. सो वो नहीं बताना हमने, बिकॉज सारे मेटल्स करते हैं, सारों में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है. कौन सी चीज है जो सिर्फ इनमें होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन जस्ट से हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. एंड सेकेंडली दे हैव हाई डेंसिटी. ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो करते हैं. सारे मेटल्स में ऐसा नहीं होता, ग्रुप 1 तो खास तौर पे ऐसा नहीं करता. Next, lead is a metal with proton number 82. Use the periodic table to state the number of occupied electron shells. वही बात दोबारा पूछ रहा. Again, we'll go in the periodic table. Row देखेंगे, 6th row है, 6 or 6. Letter में भी लिख सकते हैं. Use the periodic table to state the number of electron in the last shell. Last shell का मतलब है आपने उसका ग्रुप देखना है, उसका कॉलम देखना है in the periodic table, and that, if you look, it is कार्बन के नीचे आता है ये. So this is 4. Okay, or 4 नंबर भी लिख सकते हैं. सेम क्वेश्चन, एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन. अगला वाला भी सेम बात, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं. कॉपर इज अ मेटल. एक्सप्लेन व्हाई कॉपर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इट हैज फ्री, अगर फ्री का वर्ड नहीं यूज करना, मोबाइल, मोबाइल का वर्ड नहीं यूज करना, डीलोकलाइज्ड. प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, अगर वो भी नहीं यूज करना, सी ऑफ electrons, कुछ भी लिखते हैं, as long as you're conveying the idea that it has electrons that are free. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे electrons free होते हैं, ऐसा नहीं है. There are only the valence electrons that are free. Okay, there are several commonly used alloys of copper. In fact, alloys also borrow the same properties that metals have. तो alloys भी good conductors होंगे, वो भी shiny होंगे, वो भी malleable होंगे, वो भी ductile होंगे, उनसे भी wires बनेंगी, वो भी high density के. तो
होता क्या है alloy? It is a mixture of metal होना जरूरी है, and another element. Metal के अलावा दूसरा metal भी हो सकता है, दूसरा non metal भी हो सकता है, but metal एक होना जरूरी है. Next, aluminum is a metal. Use your knowledge of the structure of metal to explain why aluminum is malleable. क्यों malleable है? Because it has ions, cations that are in layers. So उससे क्या फर्क पड़ता है? Those layers can slide. That is the reason. So we'll say that cations, it has cations in layers that can slide over each other. देखें 2 मार्क का क्वेश्चन है, जिसका मतलब है कि आपको 2 बातें तो जरूर करनी है. अगर आप सिर्फ लेयर्स कह देते हैं, दैट डजंट एक्सप्लेन कि अच्छा ठीक है यार लेयर्स हैं, मान लिया, तो उससे वो मैलिएबल कैसे हो गया? वो इसलिए मैलिएबल हुआ क्योंकि लेयर्स स्लाइड करेंगी तो उनसे वायर बन सकती है, शीट बन सकती है, सॉफ्ट हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ वी नो दैट इट इज मैलिएबल. ओके, एंड दैट्स द काइंड ऑफ क्वेश्चंस that examiner asks you about metallic bonding. I hope the ideas are clear. Let me know if Sir, you have I any have a questions. question. Yeah, go on. सर ये जो 1 का सी पार्ट था वहां पे लिखा हुआ था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स बट नॉट ऑफ मेटल्स. तो यहाँ पे जो सिल्वर था वो तो मेटल है ना, तो लाइक मेटल की तो हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो व्हाई लाइक दे हैव मेंशन के नॉट मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स. Because group 1 को अगर आप देखो तो group 1 का low melting point होता है और low density होती है. So that is one point where they both differ. वरना group 1 और बाकी metals, transition metals, they are both shiny and they both conduct electricity. Okay sir, thank you. You're welcome. All right. See you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.